Addition of rational numbers. We'll see. Let's understand this thing called operations. The various operations that we do are addition, subtraction, multiplication, division. So children, we have lots to learn. We have had enough of slow paced learning. I hope by now you know what is LCM, you know what are like fraction, you know what are unlike fraction, you know who is greater, smaller, all these are known. Okay, Ritisha, do one thing, but to go back, press the one button on the fan. You don't need. You'll be feeling very hot out there. The door is closed. If you want to switch on, you can switch on. Okay. So we are going to do addition of rational numbers. Now, let's say we have a rational number a by b plus another rational number, say c by b, right? This is one format of addition. In this format of addition, what we are finding common is that they are like fractions. If this type of addition is given to you, then you are very lucky. Just come a little bit this side. She can also get some space. Okay, yeah, fine, comfortable now. Then this is very easy to solve. In such a case, since they are like fractions, we take the common denominator and we just add the numerators. This is very easy. Let's say, for example, somebody is asking me to add 2 upon 5 plus 7 upon 5. Since the denominators are same, my job is take the common denominator, do 2 plus 7, which is equal to 9 upon 5. Anyone has any query, any doubt in this process? But since your bad luck is very bad, this sort of questions usually you will not get. You will get questions which will be, so let us make your bad luck face. So your questions will be A upon B, they'll ask you to add with C upon D. Unlike. This addition is possible, again same concept. What happened? No, not that. What did you do right now? Do you want me to ask you to leave the class? Some insects bite you or what? What is the problem in your life? Okay. These type of problems, we have to first make it like fractions. Now, do you know how to make like fractions? Yeah. So, like fractions means you have to first calculate the LCM, then make a common denominator. Common denominator means the denominator will be your LCM, and after that your process will be same as this process. Yes or no? Yes, sir. चले इसको करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं. एक एग्जांपल, लेट्स से किसी ने हमें पूछा 2 upon 3 you add it with 7 upon 6, right? Now they are unlike fractions. Now how to solve this problem? We'll write solution. First we'll do LCM of 3 and 6. 3 and 6 we know the LCM will be 6 because 6 is directly divisible by 3. So the LCM is 6. Now see, now you are in grade 8. Don't do it by that grade 7 wala process. Abhi isko kaise karenge? This is the, if anybody doesn't understand this step, I'll do the baby step also. So let's see what is the baby step. Let's first see baby step, which you will actually not do. This is for understanding. So you take 2 upon 3. Vakul, I have already given you the last warning. After this, if you do anything that distracts my attention, I will be in this room, you will be out of this room, or you will be in this room, I will be out of that room. No other children will like that I will be out of the room. So everyone will vote for you to be out of the room. Do you understand? Yes. Yeah, very good. You want me to stop the class? So the step that we are going to do is that we want to make this denominator as 6. So the option we have is we multiply it by 2 by 2. So this becomes 4 by 6. And then this is not what you will do. This is just for your understanding. And 7 by 6, well, we can just multiply it by 1 by 1. It becomes 7 by 6. Then our job will be to add these two. So we make it a common denominator 6 and we add 7 and 4, which we get as 11 by 6. This is our answer. Now this is the understanding part. But we are now in grade 8. Slowly after this, we will go to grade 9. Take me, कुछ problem है क्या बेटू? कुछ miss कर गए हो क्या? देखो नहीं इधर. So after that, you are supposed to go to grade 9. So we have to do it in a matured manner. So the matured way of doing it, जो नहीं समझेगा मुझे पूछेगा. हाँ, look at the step. First of all, draw a line. Whatever is the LCM, put the LCM here. Right? Take the LCM.
Divide, there are two participants. Take the first participant in your mind. Who is it? 2 by 3. 2 by 3. What is the denominator of 2 by 3? 3. Divide 6 by 3. 2. And multiply that with the numerator. So basically the operation you are doing is 6 divided by 3, and then the result you are multiplying with the numerator. Did you understand? लेकिन इसको कोई ऐसे लिखता नहीं है, ये आप मन मन में करो, ये मैच्योरिटी आना है आप में. 6 divided by 3, ask yourself कितना हुआ? 2. 2 multiplied by 2, 4, plus 6 divided by 6, 1. 1 into 7, 7. अच्छा, आप इतना भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 into 2 लिख लो. इनिशियली यू आर स्टिल छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा, और इसको 1 into 7. Where did we get this 2 from? 6 divided by 3, 2 into 2, 6 divided by 6, 1, 1 into 7. अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? 4 plus 7 by 6. अच्छा, the proper way to, even handwriting matters. When you put a equal to, this line of separation should be in line with the equal to. That's the ideal correct process. 7 plus 4 is 11 divided by 6. Any child who has not understood, Harshit and Hannah, have you understood this step? This is what we are actually doing. If any time you have a doubt, Riyan क्या हो गया? किताब उताब बंद करके बैठे हो? We are trying to understand. I'm seeing you fiddling with pens and looking down. Where is the maths copy? That's not open. So this is what you will be doing. This is the understanding of what we are doing. ठीक है? एक और करें, ऐसे एक और करते हैं, क्योंकि ऐसे ही करना है. These type of problems, usually you will get 1 or 2 problems like this. सृष्टि समझ में आया बेटो? ऐसे प्रॉब्लम आ गए तो बहुत आपकी किस्मत अच्छा, लेकिन ऐसे आने के चांसेस नहीं के बराबर है. हाँ बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं आप, और ऐसे ही जाएंगे. अगर आपका स्कूल भी ऐसे सिखा रहा है ना, प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर राइडिंग साइकिल्स विद 2 व्हील्स ऑन द साइड. सारी जिंदगी वैसे साइकिल नहीं चलानी है, बाईसाइकिल है उसका नाम, बाई में ही चलाना है, ऐसे ही आना है. ये स्टेप का टाइम नहीं मिलेगा बाद में आपको. ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं एडिशन में. आइए, लेट्स से थोड़े बड़े बड़े नंबर्स में देखते हैं. 11/8 प्लस से 17/9, इसको ऐड करने दिया हमें. Our next step will be what? We will write LCM of 8 and 9. कितना होगा? 72. 8 and 9 do not have anything in common, right? So your next step. Next step, write equal to and the line along with equal to. 72. Now अपने आप मन में करो. 72 divided by 8 will be 9. ये दोनों में ही है ना. 8 है तो 8 को छुपा दो, 9. So 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 11 मल्टीप्लाई होगा. And 72 divided by 9 is 8. 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 17. Then 72. 11 9 99. 17 into 8 136. 7 8 56 6 5 carry over. 8 1 8 plus 5 13. 136 plus 100 is how much? 236. But this is 99. So 235 by 72. हो गया. समझिंग? तो अभी कटिंग, जहां लटकिंग, आई कमिंग इन बिटवीन. ठीक है, चलते हैं. 1A और नंबर लाइन हम बाद में करेंगे. सो कम डाउन टू चिल्ड्रन. Okay, wait. Before that, some 2-3 more things let me teach you. So addition, have you understood? Okay. Okay. 2-3 more things need to teach you. Okay. Now, closure property, ये सब actually nobody will ask you later, but you should just know. Number 1, closure property.
closure property. If you add a rational number with another rational number, you will get a rational number only, nothing great. Let's add 4. Sir, 4 is not a rational number, right? 4 by 1. Let's add 3. So 3 by 1, 7 by 1. इससे ज़्यादा और क्या कॉम्प्लिकेट? रैशनल प्लस रैशनल विल गिव यू रैशनल नंबर. ठीक है. नंबर 2 1. सेकेंड, एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी, ये दो में बच्चा जनरली कंफ्यूज कर जाता है. और क्या है आपके पास? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स एंड एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ. राइट, फाइन. चलो, एडिटिव इनवर्स, आई विल गिव यू दिस विद एन एग्जांपल यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ. एडिटिव आइडेंटिटी, this is a desi way of remembering additive identity. Do you know identity card? हाँ, उसको ये वो एग्जाम में जाके भूल जाओगे, दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे. आइडेंटिटी कार्ड जानते हैं? डू यू नो योर आइडेंटिटी कार्ड? हुज फोटो इज इन योर आइडेंटिटी कार्ड? योर ओन फोटो. आइडेंटिटी मतलब जो नंबर है वही नंबर बनेगा आइडेंटिटी कार्ड की तरह. आपके आइडेंटिटी कार्ड में किसका फोटो है? आप ही का फोटो है, मेरा फोटो थोड़ी रहेगा. तो एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स गिवन अ रैशनल नंबर a by b, given a rational number a by b, it will have one additive identity such that you retain the same number. मतलब इसके आइडेंटिटी कार्ड में इसी का ही फोटो रहता है. ये नंबर क्या होना पड़ेगा? 0. अंडरस्टूड? ये दोनों में मिक्सअप हो जाता है. बाय द टाइम यू गो टू एग्जाम्स समटाइम्स यू मे मिक्सअप. आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिटी कार्ड याद करो, हूबहू वही नंबर लाना है. इनवर्स, अच्छा बच्चा खराब बच्चा हो गया. हाँ, नहीं साइन नहीं. एडिटिव इनवर्स में इफ यू एड इट विथ दिस एडिटिव इनवर्स, व्हाट शुड द नंबर कम आउट एज? 0 आना चाहिए. रेसिप्रोकल जो पढ़ोगे ना, दैट विल बी इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. हाँ, सब कुछ कंफ्यूज हो जाता है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी. यहां पे इसको इसके साथ, मेरे पास 5 रुपए है, क्या करूं कि 5 रुपए 0 बन जाए? खर्च कर दो. तो एडिटिव इनवर्स विल बी माइनस ए बाई बी. एडिटिव इनवर्स है ना, 0 लाना है. आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ कंफ्यूज कर रहे हो. एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स एड द नंबर विद द गिवन नंबर सो दैट यू गेट अ 0. हो गया? एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी बोल रहा हूं. ये तो क्लियर हो गया? अभी ये कंफ्यूज नहीं करेगा. इट विल कंफ्यूज यू व्हेन द होल चैप्टर विल बी ओवर. You will also learn something called multiplicative inverse and multiplicative identity. Then the hodgepodge will happen in your mind. Right now, it's very easy to remember and easy to forget. So, the example you gave us multiplicative identity. Multiplicative identity? नहीं, multiplicative identity तो अभी पढ़ाया नहीं, उसको मत लाओ बीच में. आप just इस पे. So, say suppose a rational number is given to you 3 by 4. I will ask you, what is the additive identity? Additive identity is always the same number, means 3 by 4 added with something should give me additive identity. Same thing should come out, 3 by 4. So what is the additive identity? 0. Clear हुआ? Additive identity कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा 0 ही रहेगा किसी के लिए भी, पर additive inverse चेंज होता रहेगा. Let's take 3 by 4. Now additive inverse. Answer should be 0. So here it will be negative 3 by 4. If it was say 4 by 3, then additive inverse will be negative 4 by 3. जो है उसी का मिरर इमेज बिठा देने का हम शक्ल. क्लियर? चलो, ये भी छोटे छोटे चीज है. अब 2 और चीजें पढ़ लेते हैं and then we are fit to do our exercise. Next thing that we will study is commutative property.
ये आप ग्रेड 11-12 तक पढ़ते रहोगे। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मीन्स a plus b is equal to b plus a. Very good. This is commutative property for any two numbers. So for rational number, how will we write? We'll write a plus b. Why does my a look like a 9? A plus b plus a c plus d is same as you put the c plus d first and a plus b later. यही है commutative. करके देख लो। सर आपकी बातों में तो हम भरोसा ही नहीं करते, मत करो। How much is it? ठीक है ना, ऐसे ही छोड़ दो। नाउ डू द उल्टा, 4/3 प्लस 2/3 कितना हो गया? 6/3 है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, ठीक है। सीख लिया कम्यूटेटिव। अब आते हैं लास्ट वन विच इज नोन एज एसोसिएटिव। मैं, तुम और वो, इट इज इक्वल टू तुम, वो और मैं। एसोसिएटिव, associative property. Associative property means a plus b plus a c is same as a को बाहर करो और b plus c को अंदर ले जाओ, एक ही बात है। You know what is BODMAS? Have you learned about BODMAS? सारे बदमाश बच्चे BODMAS। So आप ब्रैकेट को पहले करके इसको करो या इसको निकाल के ब्रैकेट बाद में करो, इट्स सेम। सर आप पे हमारा भरोसा नहीं है, ठीक है, करके देख लो। आई एम टेकिंग इजी एग्जांपल्स, राइट। लेट्स सी दिस। दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड कमिंग आउट टू? प्लस ब्रैकेट को करते हैं 3/3 प्लस 4/3 7/3। सर राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में 2/3 को बाहर रख के 1/3 प्लस 4/3। सो फर्स्ट विल डू ब्रैकेट। So 2/3, this is equal to how much? 5/3, which is equal to 7/3. Sir, rahas equal to lahas. So that means law is proved. Done. They're fit to go to the battle now. हाँ? Distributive multiplication में आता है, addition में नहीं आएगा। ठीक है? Distributive will always come in multiplication. Very good that you asked. स्कूल में ये हो गया है। Now थोड़ा और खाना खिला देता हूं, उल्टी मत कर देना, little bit more. So what all did we learn? सर सबसे पहले आपने हमें एडिशन करना सिखाया, like fractions, unlike fractions. Like fractions आने वाले नहीं है, unlike ही आएंगे, number 1. देन सर आपने हमें एडिटिव आइडेंटिटी सिखाया। एडिटिव आइडेंटिटी मींस आइडेंटिटी कार्ड, मेरा चेहरा मेरा ही चेहरा बनना है तो इट इज 0, हर किसी के लिए 0। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऐसा है कि सर मैं जो हूं ना, मैं 0 हो जाना चाहिए तो मेरा नेगेटिव। देन व्हाट डिड वी लर्न? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मींस मी एंड समवन रैशनल नंबर एड विल आल्सो गिव रैशनल नंबर। देन व्हाट डिड वी लर्न? क्यूमुलेटिव, सॉरी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव इज a plus b is equal to b plus a. एसोसिएटिव a plus b plus c is equal to a प्लस बी प्लस सी, ये भी सीखा। अब लास्ट एक और चीज सीख लेते हैं और उसके बाद चैप्टर, दैट इज नोन एज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, अच्छा इसमें बड़ा आसान चीज है। माय टीचर इज टू टीच मी लाइक दिस। सब्ट्रैक्शन नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, एवरीथिंग इज एडिशन। उन्होंने बोला सर ऐसा कैसे? मुझे तो एग्जाम में बोला था सर 7 - 3 सॉल्व करो क्लास 1 में। हमारे सर ने बोला देयर इज नथिंग कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। हाँ, सर सेज एवरीथिंग इज एडिशन। 7 plus -3, ultimately plus and minus is how much? Minus. So it is 4. Understood? So let's do one example. 2/3 minus say 4/3. Easy examples. 3 is the common LCM. 2 minus 4. What should be the answer? -2/3। -2 कभी नहीं लिखते हैं, ये बाथरूम से डायरेक्ट आया, कपड़े पहना के रखो इसको हमेशा, ब्रैकेट। समझ में आया? तो हार्ड प्रॉब्लम देखते हैं। 8/7 minus 4/3, इसको करना है हमें, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। सो हाउ डू वी डू इट? फर्स्ट वी विल डू सॉल्यूशन, अनलाइक फ्रैक्शन है, सो विल से एलसीएम ऑफ 7 and 3 कितना आएगा? 21। अगले स्टेप में स्ट्रेट लाइन, 21 नीचे आ गया, 21 डिवाइडेड बाई 7 इज 3, 3 into 8 is
24 minus 3, 21 divided by 3 is 7. 7 into 4, 28. 24 minus 28. 4 minus 4. How देसीज फॉरेन के बच्चे -4 नहीं बोलता है, -4. हाँ तो स्टाइल मारो यार. -4, -4. देन ये फिर देसी -4/21. बाई मत बोला करो, that sounds very देसी, you know. -4/21, -4/21. जब मैं अमेरिका के बच्चों को पढ़ाया हूं ना, उसके बाद मैं सीखा. मैं भी पहले ऐसे ही बोलता था -4. ए रितिशा, लुकिंग एट यू, आई एम फीलिंग हॉट. यार स्विच ऑन द फैन. आर यू कंफर्टेबल? हाउ कैन यू बी? इट्स 39 डिग्रीज टेम्परेचर. -4/21. ए समझ में आया? तो मास्टर माइंड है पूरा, ठीक है ना. चले अब प्रॉब्लम करें. चलो, सो लेट्स टेक आवर टेक्स्ट बुक बच्चा लोग, एंड लेट्स गो स्ट्रेट अवे टू ये सॉल्व एग्जांपल्स बाद में करेंगे धीरे धीरे. 1C पे चलते हैं, और 1C में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज होमवर्क. 1 क्या है? सब लाइक फ्रैक्शन दिया है, नहीं करना है. Question number 2. In question number 2, we gallop all odds. Did you understand, Hannah and Harshit? Question number 2, we will do 1, 3, 5, 7, 9 like that right now. ये लो सृष्टि. Question number 1 homework. पेन मत लगाना, नया किताब में क्यों पेन लगाओ? पेंसिल लगाओ. मुझे दुख होता है, ऐसा लगता है जैसे मैं चेहरे पे लिख दिया तुमने. I say golden words once only. If you have not heard, I'm helpless. Yes, sir. Oh, you need a book. Now, how do I help you? Can anyone spare one book? Extra है? हाँ है ना एक. Take it from him. Where's the thank you? Thank you. Oh, you said, but that was very low. English has got 5 beautiful words. Please, may I, thank you. जोर से बोलना है, जो देता है उससे भी खुशी होता है. Who gave you the book? Who gave you the book? See, I'll upfront now it test you. Who gave you the book? That organism having so many bones and 2 legs, and this is socializing skills. Out of all these fellows, this fellow has been with you even 1 month before. Do you agree? Then what is his name? What is her name? Ritisha. And what is his name? I don't know. In social studies, what are we learning? Man is a social animal. Man has to live in company. Man wants social company. A man का company है. A. What is her name? What is his name? Hey. Huh? Arish. Very good. What is her name? What is his name? You know what is his name? What is his name? Yes, what is his name? No, his name. What is his? That means, and what is her name? Srishti. Her name is Srishti. What is on screen? What are their names? लिखा हुआ है. So you understand how poor is your socializing skills? We have almost going to do, how many classes we have done? बहुत कर चुके हैं. सामर्थ बता दो, उसका नाम क्या है? इसका नहीं पता. तो भी वही. ए अभी को ये आरिश. हाँ आरिश. हाँ ठीक है आरिश. आरिश बहुत अच्छा. इसका नाम मेघना. You all are absolutely pathetic is the word. इसका नाम मेघना. Come Rian, you start. What is his name? What is her name? You don't know. What is his name? These 3. They are like untouchables. Refugee हैं, दूसरे देश से आए हैं. हाँ. What is her name? What is his name? The boy with the specs on.
What is his name? What is the boy's name beside you? What is the boy's name right of you? So you understand what is socializing skills? Well, you all are going with a toss. शशि नाम बता दो, पीछे वाले का नाम क्या है? देखो देखो, चलो चलो, कोशिश तो करते हैं ना. आपके पीछे कौन बैठा है? मैंने बोला था इसको, हाँ. बोला है इसका नाम क्या है? ये पीले वाले. अभी फिर उसका नाम, ब्लू टी शर्ट, नहीं पता. फिर वो समर्थ, तो जानते हो उसका? अत्रेया. इसका रेड वाले का? हाँ, फेमस को सब लोग जानते हैं या फिर नोटोरियस को हर कोई जानता है? इसका अनन्या. इसका आर्यश, सेम स्कूल. उसका रितिशा. रितिशा, लेट्स ट्राई. व्हाट इज हिज नेम? There's no point in keeping quiet. What is his name? What is her name? At least you girls have also not mixed up with each other. I'm very saddened with this. ये हंसने की बात नहीं, मुझे ना आज बड़ा दुख हुआ है. मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं हूँ. We are not promoting Glendalians and Phoenix Greenians and all out here. We are promoting students who are of grade 8 and who study with me. It is the first time in my batch. मुझे तो अब तक लगता था everyone knows. इसका नाम क्या? हाँ, वेरी गुड. सृष्टि. आपका इसका नाम? उसका नाम? उसका नाम? हाँ, सबसे पीछे जो है, ये मेमोरी गेम हो रहा है ना. हाँ, रितिशा. उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद नहीं पता. उसके बाद, उसके बाद अनन्या. बोलो तो सबका नाम यहाँ से. हाँ, आरिश नहीं, आर्यश है इसका नाम. हाँ 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 हाँ. रियान, रियांश नहीं, रियान, रियान. देन हाँ हाँ, देखो, वेरी गुड. आपको भी आता है सबका नाम? आज बहुत दुख हुआ मुझे. ये मेरे स्टूडेंट्स ऐसे, मेरे स्टूडेंट्स मैथ्स में 2 नंबर कम ला सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट फेल इन इंटरपर्सनल स्किल्स. कल परसों बाहर में कोई मिल गया और पूछे कहाँ पढ़ते हो? जेडी सर के पास पढ़ते हैं. अपने साथ वाले का ना हम नहीं जानते, जरूरत ही नहीं है उसका नाम जानने का. रितिशा को पूछो व्हाट आर देयर नेम्स, व्हाटएवर. Let me ask you this question, silly question you ask. Take a time, my dear, to get to know your classmates also. Understood? Rather than doing unnecessary disturbance in the class. Those 2 onlines have actually missed out the fun. But I think they would have easily told everyone's names. Good, Ananya. And good, Atreya. I also like your confidence कि मैं सबका नाम जानता हूँ. सामर्थ, चलो एक में मार खा गए, तुम भी एक में मार खा गए ना. सबका नाम बोला है. हाँ, अब मैं पीछे वाले के ही नाम नहीं बोल पाए और मुझे देख देख के पीछे वाले की नाम सोच रहे हो. कैसे पहुंचे? अच्छा, मैंने देखा था उसको एक बार. आर्यश भी अच्छा ही किया. एक आध वो भी नहीं सका, बाकी ये भी बोल दिया. हो रहा है कि नहीं? है ना? एबल टू डू? वी आर डूइंग द ऑड्स. 2 का ऑड्स करके फिर 3 में चलेंगे. तो 2 का सिर्फ ऑड भी कर रहे हैं. हाँ हाँ, इवेंट्स घर पे करना है. क्यों, तुम सब कर रहे थे क्या? कोई बात नहीं. कितने कर लिए? हाँ, कोई बात नहीं, और 2 कर लो, सारे कर लो. हाँ, गुड यार, तुमने हिंदी बोला पहली बार. आई सल्यूट यू. आज तुम्हारी मुंह से हिंदी निकला है. अब तक हमेशा अंग्रेजी बोलता है ये. क्या करूं यार, मेरे अंदर तो देशभक्ति ज्यादा है. Many of my students say, so you don't know how to speak English. I said, no, I'm very poor in speaking English. Appreciate that, Riyan. Good. और कौन है अंग्रेज भक्त यहाँ पे?
There was one girl from Pebble. I had taught her from grade very senior to you guys. She would be joining in job next year, I think. Yeah, from grade 10 onwards till 11, 12. Then when she was in US, I've taught her. Her special language was Hindi, but she never used to speak in Hindi with me, and I have never spoken in English with her. But we studied from grade 10, 11, 12. I think engineering first year also, yes. She used to ask me, what is the answer, sir? 34.2. मैं बोलता था हाँ 34.2 आंसर है. But her special language in US also Hindi was a special subject. तो मेरे से हिंदी नहीं बोलती थी और मैंने भी कसम खा लिया I'll not speak in English. ए क्या वीडियो क्लिपिंग बनाया तुम? हाँ डाउनलोड करके कट मारा उसको और फिर व्हाट्सएप पे घुमाया स्कूल में. दो लोग को भेजा, किसी को मत भेजा. विस्पर इज लाइक दैट ओनली. तुम्हें ही बता रहा हूँ, किसी और को मत. इट्स ओनली फॉर यू. हाँ ओनली फॉर यू, किसी और को. ऑल डन. What are you? This is what are you doing? Grocery store. ये maths है क्या? Where is the number? If your test copy has problems done in this manner, even if they are right, they are going to get wrong from me. At this age, don't expect me to put strain on my eyes. When you present your test copy to me, that day you are a waiter and I have come to the restaurant. ये शरीर खुजला खुजला के साथ डाल दूं कि आपको ऐसा करके मुझे टेस्ट कॉपी मत दिया करो. एकदम लड्डू दूंगा मैं. ये लिखे हो. His writings are like what? You know chicken? You tie a pen on the leg of the chicken and you ask the chicken, chow. As the chicken moves, it will make some marks on the ground. That is your handwriting. Look how she is writing. Look how she is writing. He is writing. क्या लिखे हो ये? हाँ. 3 में आगे. 3 में इवन कर लो, ऑड कर लो. आपकी मर्जी. जहां फंसोगे मुझे बोलोगे. आंसर साथ साथ रहते हैं, आप टैली करके करके जा सकते हैं. थर्ड में बिट्टू ये करो. सारे में ऑड इवेंट्स मतलब 1 4 है तो 2 करो. 1 and 3 करो. 2 and 4 घर पे करो. क्या सामर्थ हो रहा है ना? हंसी रहे तो. कितने नंबर पे गया है अभी? Harshit able to do. If you are getting stuck up on any question, just ask me. Yeah, very good. ओ बाबू हो रहा है कि नहीं? प्रीतिशा able to do. फंस गया क्या? हेल्प चाहिए? फिर 0 and -2/5. 0 के साथ कोई भी नंबर ऐड करोगे. 0 इज व्हाट? एडिटिव आइडेंटिटी. जो नंबर है वही आएगा. यही तो सिखाया. 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ना. 0 के साथ हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वही नंबर हमें मिलेगा. इट इज एडिटिव आइडेंटिटी. Hey, did you do the homework worksheet? Yes, I did. Sure. Sir, वो हो गया सर. सेकंड हो गया. अब थर्ड कर. Third one also odd even. Yeah. Whatever is your wish. If there are 8 questions, you will do 4 here, 4 at your home. Only 4 questions. Yeah, which you will never do at home. That also I know. Yesterday, the last class we had gallop some problems. Have you done those from galloping? You know, you don't know the meaning of the word gallop. A horse gallops. So this way of doing problem is called galloping. 1, 3, 5, 7. I completed those.
And the ones that we galloped, have you done those at home? Yes. Sure. Yes, sir. Good. Time for a PTM with your mom then. You're being honest, so that's why. Pardon? You're being honest, so I need to cross verify with her. Is he actually doing or goli marofying here? Yes, sir. My mom was 3 times there. Yesterday, I don't. My mom was 3 times yesterday. If we had work, Hmm. I don't know. No. Oh, yesterday we didn't have work. Yeah, yesterday you didn't have homework. Have you made the notes on your own of fourth chapter so far? Have you opened the book of Lakshmi Singh and read the fourth chapter? Have you made notes? So was that not a part of your homework? You mean to say I will write here, please make notes. When the class ends, don't I say that you need to study and read the textbook and come? I also have a practice here like class, stand outside the class. Anyone getting out from this corridor will watch you. And I'll say free selfie point. हो रहा है अनन्या? ये नहीं करते हैं, ये एक और कॉमन प्रॉब्लम. अच्छा चिल्ड्रन सी, suppose I give you these habits, try to develop from now. 2 by 3 plus 5 by 3. Please understand, the next step should always come with equal to. Many children will write the next step as this. This is wrong. This stands for or implies that. I'll tell you where this one will come. Where do we use this? In grade 7 you have done linear equations, basic linear equation. 5 plus x equal to 8. Now equal is already there. Now we write or x equal to 8 minus 5 or x equal to 3. ठीक है अनन्या, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है ना, यहाँ और नहीं डालते हैं, यहाँ इक्वल डालते हैं. अगला स्टेप क्या होगा? 3. यहाँ पे लिखेंगे 2 plus 5. आज से धीरे धीरे आदत डालिए, इधर ये वाला सिंबल नहीं डालते हैं. क्लियर? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? प्लग पॉइंट. So therefore, Therefore, very good. This stands for therefore. What is the meaning of this one? hence. Hence, or better word is since. Okay. Do you know the meaning of this one? No. Similarly. Similarly. ठीक है? This one means or. Or can also be understood as implies that. This one means equals to. ठीक है? ये वाला नहीं डालते बिट्टू, ये वाला इक्वेशन में डालते हैं, यहां पे इक्वल डालते हैं. अभी से आप आदत डालिए, धीरे धीरे हो जाएगा. Anyone who has been using this symbol, Hannah, Harshit, if you are using this symbol here, try to amend it by putting an equal to. Hygiene is very important. Okay, sir. तो इसके पीछे भी तो आंसर है, वहां क्रॉस चेक करना, उसके साथ भी कर, तभी ना दोस्ती बढ़ेगा, जान पहचान होगी. नहीं किया है तो उसको दिखाओ, कर लिया है तो उससे देखो. हाँ. वो दुश्मन थोड़ी है हमारा. तो फिर ए अत्रेय, नेक्स्ट क्लास में तो पोजीशन चेंज करेगा. हाँ, हमेशा लेफ्ट फ्लैंक में खेल रहा है, सेंटर फॉरवर्ड में आएगा तो. Sir, done with the second question. Son, with the second question, move to the third. Again, pick up a choice, whether on odds or on evens. Your choice. If you do odds now, then do evens later. 62 समझ में आ रहा है तो
Who is one textbook short in this bench? Huh? I do not. You don't have a textbook? I mean, at home I do that. What, it's laying eggs at home? Hatching chickens? Why is it at home? Where is your bag here? वो क्या लाए हो उसमें? आलू प्याज है क्या? Then the only thing you need to come with my class is you, one maths copy and one maths book and a pen. Sir, I brought everything for you. Good wishes, lots of love, but didn't bring the textbook. Next class, you be careful. One thing missing. I'll make you go home and get the textbook. हाँ बोलिए सर। हाँ लीजिए ना, वहाँ पे आपके यहाँ ले लीजिए, नहीं है तो आप अंदर भर भी सकते हैं। योर विश। ये सब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये थर्ड वाले में इक्वल टू है क्या? हाँ बस जरूर लगा सकते हैं। वेरीफाई फॉलोइंग, हाँ वेरीफाई फॉलोइंग द नहीं वेरीफाई थर्ड वाला कैसे करेंगे, एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ। पहला प्रॉब्लम बोलो तो मुझे, थर्ड वाला एक करके दिखाता हूँ जस्ट फॉर स्टेप पर्पस, कैसे करते हैं। आ जाओ, थर्ड वाला बोलो मुझे। नहीं, क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई द फॉलोइंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, 3 का 1 बताओ, वेरीफाई। इसको कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूं आपको, बोलो। नेगेटिव 12 by 5 हाँ 2 by 7 हाँ equal to हाँ 2 by 7 हाँ plus negative 12 by 5. नेगेटिव 12 by 5 है ना। नेगेटिवों को ना बुक में रहे ना रहे आप ब्रैकेट डालने की आदत कर लो। हमें प्रूफ करना है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ऐसे प्रॉब्लम इस तरह से कीजिएगा, करने का टेक्निक बता रहा हूं, करना आपको आता है। फर्स्ट राइट LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। थिंक इट टू बी ऑलवेज लाइक अ तराजू, समझते हैं वेजिटेबल बेचने वाले का। ये इक्वेशन बैलेंस है ये। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? लहस। ये हो गया रहस। आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? नेगेटिव 12 by 5 एडेड टू 2 by 7। तो इसमें कैसे करेंगे LHS को? अब हम लिखेंगे इसमें, इसका LCM आपको पता ही है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 35 लिख के इधर ब्रैकेट में लिख दीजिए LCM ऑफ 5 and 7 is 35, ठीक है ना। 35 divided by 5 is how much? 7. 12 7 84 plus 2 into 5, 2 into 5 कितना हो गया? नेगेटिव 84 प्लस 10 by 35. How much is it? Negative 74 by 35. Clear? Now you parallelly do RHS. ये क्या टपर कर रहा है, इधर दिखता नहीं है। अभी RHS करो। RHS is 2/7 plus -12 by 5। मत देखो, जो ऐसे नहीं करेगा उसी को काटूंगा एग्जाम में, मुझे ऐसे भी काटने में मजा आता है। दिस इज 2 into 5 plus negative 12 into 7, 10 plus negative 84 divided by 35, 10 minus 84 by 35 equal to negative 74 by 35. Now you write लास्ट में, ये हो गया ना। अब वो लिखो, सिंस लहस इज इक्वल टू रहस हेंस वेरीफाइड। ये होता है प्रॉपर वे ऑफ डूइंग मैथ्स। डिड यू अंडरस्टैंड? प्रोसीजर बताना हूं।
आपको लग रहा होगा सर इतना लिखा रहे हैं, हाँ इतना ही लिखना है, आप विद्यार्थी हैं। कौन सा रूल? हाँ प्रॉपर्टी तो है ना, उसको वेरीफाई करने दिया है ना। हाँ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। So did I start the photo? हाँ Shall I finish the code page? You- The fill in the blanks. Can I start that also? yeah, do it Bitu, do it. That also you can gallop the fill in the blanks once. Now in the fill in the blanks you try to apply the knowledge of laws. This is a very nice question she asked. Samar, तेरा ही आंसर है। तुमने पूछा ना लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं, उस लॉ को 5 नंबर क्वेश्चन में अप्लाई कर। देख तो 5 नंबर क्वेश्चन कैसा है, फिल इन द ब्लैंक्स देख रहा है। अब इसमें तुम डायरेक्टली बिठा सकते हो, क्यों? यू नो बाय कम्यूटेटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ। लेकिन तुम्हें जब वेरीफाई करने बोला है ना, वेरीफाई मतलब आप करके दिखाइए, सिर्फ कानून मत लगाइए, आप करके दिखाइए, वेरीफाई। अगर तुम्हें ये बोलता कि दिस इज इक्वल टू दिस बाय विच लॉ, तो आप लिख देते कम्यूटेटिव लॉ, बट इट इज टेलिंग यू वेरीफाई मींस यू शो दैट इट इज देयर, सो वी हैव शोन इट। प्रमाण दीजिए। How much have you done? How many have you done? So I did all the questions to the third one. Third one. Already. That girl is asking question number 5 and you're still in third. I'm doing already. Who asked you to do odd and even? Your count of, what to say, disobedience is day by day increasing, which means any day the missile will be launched in your name. I'm just wishing that next class you come without the textbook so that I can exercise my. नहीं, हर बार पनिशमेंट अलग होता है, एक ही तरह थोड़ी होता है। पनिशमेंट देने से ज्यादा मतलब होता है तड़पाना, और मुझे तड़पा के किसी को बड़ा मजा आता है। रोज चखोगे कहोगे मजा नहीं आया। I'll not send you home. I'll send you home saying that go and get the textbook and come. First of all, finding you at home, opening the door, your mom will get surprised. Hey, what happened? Why did you come? Obviously, you will not say for drinking water. So, आरती की थाली रेडी होगी वहां पे एक, है ना? अरश, धीरे धीरे पीठ सीधा कीजिए और स्ट्रेट लिखिए। आगे चल के आपको पीठ में दर्द होगा, उसका पोस्चर देखिए। टेकबीर का ऐसे लिखते हैं, रियान का पोस्चर देखो ऐसे। जितना आप ऐसे सो के लिखोगे, हमारा बैकबोन एडेप्टेशन पढ़े हैं आप लोग, धीरे धीरे पढ़ोगे बायोलॉजी में, है ना? डक के फीट कैसे हैं, वेब्ड है ना, एडेप्टेशन। आप भी, आपका कमर भी ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद सीधा लिखना है, बैकबोन स्ट्रेट। यस सर, बोलिए। फिफ्थ वाला आपने किया दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, तो आपने यहाँ पे लिखा 3 हाँ, तो इसको ऐसे लिखने की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिए, या तो आप यहाँ लिख दीजिए सिंस दिस कम्यूटेटिव लॉ, है ना बेटा? देयरफॉर ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। मैथ्स जब भी आप करते हैं, थिंक लाइक अ मूवी, यू आर इन अ कोर्ट। अदालत को सबूत चाहिए, वी डोंट गो बाय इमोशंस। सर आई एम वेरी ऑनेस्ट, नो, गिव द प्रूफ दैट यू आर ऑनेस्ट। मैथ्स में हमेशा प्रूफ। पहले पहले थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अभी आप सीधा हो जाएंगे ना, इट विल बी वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट दैट। एंड अनदर थिंग, होल्ड द पेन इन सच ए वे, व्हाई दिस स्टेनिंग इज कमिंग, यू नो, बिकॉज यू आर योरसेल्फ स्टेनिंग योर राइटिंग, है ना? ये छोटी छोटी चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं। अभी ऐसे लिखना है। आप लेफ्टी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इस तरह से लिखो कि राइटिंग के ऊपर आपके हाथ नहीं आए। हाँ, दैट्स फाइन, बट ऐसे कट नहीं करते। कट इज ओनली वन, इतना घुची पिची करने की आदत है। सौंदर्य, सुंदरता रहना चाहिए हमेशा। कोई अत्रेय कर रहा है कि नहीं? कितना नंबर में है? थर्ड क्वेश्चन,
कूद जाओ खिड़की से, अपने घर के, मेरे नहीं। थर्ड क्वेश्चन, एनीवन हियर हु इज ऑन क्वेश्चन नंबर 3? You. So we have a pair of tortoise. I thought we had, oh, we have a triplet of tortoise. Very good. तू गाजर खा। Every year you have been in the same section in school, or your sections have got changed? Obviously. No, इसका तो हर बार साल करेगा, कौन सा टीचर इसको हर साल बर्दाश्त करेगा? I should have been your teacher. 5 days with me, सीधा कर दूंगा। Even my senior students, who everyone is always anxious to ask me, sir, how many students in grade 8? Because grade 8 is a new batch. And everyone is anxious to know about you only. No, no, you are that notorious. तुम विख्यात नहीं हो बेटा, कुख्यात हो। फेमस नहीं बोलते हैं इसको। Famous people are also known, and notorious are, don't put that mark on the table. Yeah. Ah. Very good. Next day you will sweep and mop also. People are so sick and tired about you that they also know. Every batch is asking me, sir, how is he in the class? Has he got your dose so far or not? सही में? सर इसमें सॉल्व नहीं करना है ना? कौन सा? फिफ्थ वाले में नहीं, कि लॉ लिखना है। ये जैसे ऐसे ऐसे इसने किया ना, देखो ये पहला वाला क्वेश्चन से लिखा है, since a plus b is equal to b plus a, therefore she has written this. ये तो fill in the blanks हैं। ऐसे क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आएंगे नहीं। चलो चलो आगे बढ़ो, कब से क्वेश्चन कर रहे हो? एडिटिव इनवर्स इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, सब इंक डाल दो तो भी फुल मार्क्स आते हैं। So tomorrow is a holiday for all. Yes. Day after tomorrow is also a holiday. फिर करेंगे तो 2 दिन है, फिर Saturday Sunday is also holiday. Wow. What is the mood of parents at home hearing this? We're happy. अच्छा। हम तीनों के happy होंगे। ईद के 2 दिन की छुट्टी है, ठीक है ना? इनके 2 दिन है, 2 क्या, फिर सैटरडे संडे भी तो है, 4 दिन हो गए आपके। ग्लेंडल 4 days, हाँ 4 days। तो टेक मी टू कुछ और दिन बिता के आ सकता था ना, ये अभी अभी आ जाने का क्या था? यू कुड हैव हैड सम वेकेशन टाइम। अच्छा, आर्यश क्या बनाएगा? 4 दिन है, क्या ब्रेकफास्ट क्या डिनर बनेगा? हाँ? फंस गया क्या? एक्चुअली आई एम मोर इंटरेस्टेड, ये सब करके करके ना नंबर 7 में आ जाओ जल्दी से, सब्ट्रैक्ट। सेवन एंड 8 से इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम शुरू होता है।
compulsory commutative property of addition. हाँ हाँ, वो तो नहीं तो आप उसके कैसे शॉर्टकट में कैसे कर रहे हो? आई टोल्ड यू ना, डूइंग मैथ्स इज लाइक अदालत, यहाँ सबूत चाहिए। ये वाला ऐसे क्या कपड़े टांगने के लिए? पूरे फ्रिज में ब्लैक करने फिर बाल कंघी क्यों नहीं है? सर आज लगे आए हैं सर। वो अगले क्लास में बाल काट के कंघी करके आएगा, सर मैं छोटे मोटे सर। देख के लग रहा है। सर आप पूछ लो सर, मैंने किया है। आंख है मेरी, बटन नहीं है। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, अगले क्लास में कंघी करके आएगा तू, वरना तू जानता है सोल्यूशन। सर वो डर से मैं रोज काम करके आता हूँ सर। रोज मेरे यहाँ क्लास नहीं होती है ना? रोज मैं ऑफिस टाइम से आता हूँ सर। एक दिन जल्दी किया गया, लंच रूम के टाइम पे आप ही को पार्किंग में मिल गया। तुम्हारे साथ वही वाली बात हो रही है ना सर? रोज ऑफिस टाइम से आता हूँ, एक दिन जल्दी गया तो आप ही को पार्किंग में मिल गया। Sure. यस, टेल मी। I finished the 7th with the 8th bit. How do I do it? 8th bit. 8th bit is okay. Let me tell you before you start the 8th one. 1 minute, Hannah. Now 8th one is all about English and less about maths. Okay, it's more about English. Let's see. The blue ink is very stubborn, like one student in my class. Okay. Okay, Hannah, you answer this question to me. Subtract 2 from 7. Try to answer this to me. I don't want the answer. What will you do? Subtract 2 from 7. In English, it means what? So we are subtracting 2 from the number 7. तो कैसे लिखेंगे? मैथ्स में कैसे लिखेंगे इसको? 7 minus 2. 7 minus 2. 7 से 2 को निकालिए। सो इस लैंग्वेज का मतलब होता है 7 minus 2. अभी आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पहले क्वेश्चन में है subtract 3/4 from 1/3. Now you put it like this: subtract 3/4 from 1/3. इसका मतलब क्या होगा? 1/3 से 3/4 निकालिए। Have you understood? Yes, sir. So whenever you get a question like this, first break it into a simple question in your mind. In your mind, this is how your mind is thinking, है ना? This is your mind. Subtract 2 from 7. You know how to do it. 7 minus 2. After that, if they give you subtract abracadabra from dabracadabra, so you know what to do. Just place those numbers in your mind and start doing. And let me tell you, many children do mistake in these problems. The mistake is not in mathematics. The mistake is in English. They will do 2 minus 7. पूरा उल्टा आंसर निकाल के आएगा। हाँ बोलो बेटा, you wanted to ask something. Sir, this one I finished it. Huh. Last one. 8th one. So 8th one is you using rearrangement, using the rearrangement property, find the sum. So it's simple. Tell me the question. First question. 4/5. 4/3 plus 4/3 plus 3/5. Okay. 4/3 plus 3/5. Then negative 2/3 negative 2/3 plus minus 11/5. 11/5. यही है प्रॉब्लम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, तो इसको खोल लो ना आप। कैसे खोलोगे? 4/3 plus 3/5. Now you multiply. Plus into minus is always minus. Plus into minus, minus. Now your choice. We can do all together. We are finding the common numbers 3 and 5 out here. 3, 5, 3, 5 means the numbers are 3 and 5. So what is the Lasama of 3 and 5? 15. You write LCM of 3 and 5 is 15. Now try to do 15 divided by 3 is 5. So the first number becomes 5 into 4 plus 20 plus 9 3 into 3 minus 2 into 5
and here minus 11 into 3. So it becomes 20 plus 9 minus 10 minus 33 by 15. So let's do it. Plus plus is plus 29. Minus minus is also plus, but with minus sign. Minus 43. Okay. 43. Or if you don't want to do it this way, you do it in a baby way. We can do that also. 29 minus 10 minus 33 by 15. So you first take out 10. So it's 19 minus 33 by 15. Okay. So how much is it? 33 minus 20 is 23, 13. But we are doing 19. So it will be 14. Minus 14 by 15. And put the minus in bracket at last. So that's your answer. So we don't have to, we can directly just add it, right? There's no rearrangement. This is what rearrangement we have done. We end of the day, no. See, in this chapter you might be learning rearrangement and all. This is all mathematically correct. Nobody will take away any marks of yours. But make sure that you are procedurally correct. See, in these problems, the errors that children do: loss of attention, 1 minus, you will write as plus. After that, it's like hunting needle in grass. You won't be able to find where mistake, what mistake. And see, in the exam, there won't be the answer given to you. So you will submit what you have done, thinking that what you have done is right. But later you are getting Haldiram ka laddu. So be very careful with these problems. Attention is very important. ठीक है बेटो, हर्षित समझ में आया ना बेटा? अटेंशन बहुत जरूरी है. कोई भी एक माइनस को प्लस लिख दोगे ना, पूरा हो गया. कहाँ गार्बेज घुसा आपको? दीज आर ऑल गीगो प्रॉब्लम्स. गार्बेज इन, गार्बेज आउट. अच्छा, अदर्स, डिड यू अंडरस्टैंड? ये सबट्रैक्ट का मतलब क्या है? शांति से बैठे नहीं से. सबट्रैक्ट 2 from 7. क्वेश्चन नंबर 7, टिपिकली क्वेश्चन नंबर 7. हाँ, टेक 2 out of 7. तो वीडियो भी रहेगा, आप वीडियो में भी देख सकते हैं. एंड 4 दिन का हॉलीडे है. सो विद इन दिस 4 days ऑफ हॉलीडे, आई वॉन्ट दैट यू शुड बी एटलीस्ट डन टिल नंबर 8 तक तो सब हो जाने चाहिए. मुंडी मत हिलाओ मेरे यहाँ पे. अगर करके नहीं आया ना, जो मुंडी अभी हिला रहे हो उसी में कान पकड़वा के खड़ा करा दूंगा बाहर लिफ्ट के पास और लिख दूंगा सेल्फी पॉइंट. फोटो खींचो इसके साथ. The sixth one, yeah. Tell me the doubt, darling. Now the question is minus 16 by minus 5. Take it as 16 by 5 and then find the additive inverse. Then it will be again minus 16. But the question is minus 16 by minus 5, which is 16 by 5. And its additive inverse will be minus 16. But there was nothing actually you had to ask. You had to interrupt me while I was speaking. So I'm saying up to question number 8, you should be all done. If there are some children who would like to attempt, the children whom we give the Veer Chakras, if you want to attempt 9, 10, 11, I will be more than happy. There's nothing great. अच्छा चलो एक क्वेश्चन, एक चीज बोल के छोड़ देता हूं. चलो ऐसा एक सवाल पूछता हूं, एक क्वेश्चन. Let's see. I'm writing something. Just pay attention. What should be added to 5 to get 8? 5 में कितना ऐड करो कि 8 मिले? वो नहीं चाहिए. कैसे 3 मिला आपको? 8 minus 5. That is important. ये तो मुझे कभी पता है. तो अभी क्वेश्चन क्या है? What must be added to 3 by 4 to get say negative 11 by 9? हाँ, तो what must be added, इसको दो तरह से कर सकते हैं. एक तो ऐसे कर लो, मन की बात. दिस इज कॉल्ड मन प्रोसेस. उसमें आप क्या करोगे? इसमें आप लिखोगे नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू 8 minus 5, है ना ये क्वेश्चन में. यानी कि इन योर क्वेश्चन इट विल बी एज टेकबीर इज सेइंग minus 11 by 5 minus 3 by 4. One way can be that you can do it in this manner. Another way, which is the better way to do, is let the number to be added be x. समझ में आया? अब अपना इक्वेशन बनाइए. 5 में x ऐड करूंगा
तो क्या मिलेगा? नेगेटिव, अच्छा 8, हाँ चलो 8, सॉरी 8, दैट मींस हियर वी राइट, आजकल लिखते हैं लोग 80 क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 में x ऐड करूंगा तो 8 मिलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? और x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 और x इज इक्वल टू 3। लेकिन ये तो आपको सवाल नहीं है, सवाल ये वाला है, तो हम कैसे लिखेंगे? We will write let the number be added be x. So according to question 3/4 plus x gives me negative 11/9. Have you understood? Therefore x should be equal to negative 11/9 वैसे ही रहता है, ये बच्चा उधर को गया तो -3/4 हो गया। हाँ वही सेम चीज हो गया, लेकिन करने की प्रणाली अच्छी है। वो पहले वाला जो टेक्निक सिखाया था ना, वो था हाँ साहब चाय पियेंगे क्या, कितना चम्मच चीनी दूं, और ये कैसा था, मैम हाउ मेनी शुगर वुड यू लाइक टू हैव, 2 cubes, दैट्स योर टी। ये ऐसा है, थोड़ा स्टाइल से दे रहे हैं, जैसे इंडिगो में बोलते हैं ना, यू हैव अ मील बुक फॉर अस, सैंडविचेस एंड बेवरेज, वो वैसा है, ऐसे ही करोगे आप, ठीक है। 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है भाई? 36। यू राइट हियर ला सम of 9 and 4 is equal to 36. So 36 divided by 9 is 4. Negative 11 into 4. Then minus, यहाँ पे कितना आएगा? 3 into 9, which is equal to negative 27 divided by 36 और x equal to, ये वीडियो में एग्जांपल देख लेना, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, 44 प्लस 27, 44 पे 20 ऐड करेंगे 64 और 7 ऐड करेंगे 71, बट नेगेटिव डिवाइडेड बाय 36, नेगेटिव को कपड़े पहना दो, बस आंसर हो गया। और यहां इतना लिख के ना बड़ा खुश मत हो जाना, दिस इज जस्ट लाइक हिटिंग अ रन एंड वॉकिंग आउट ऑफ योर क्रीज एंड देन गेटिंग स्टम्प्ड। यहां एक्स नहीं पूछा था, लिखना देयरफॉर नंबर टू बी एडेड इज -71/36। पूरे क्वेश्चन में आपको x नहीं पूछा था, x was your assumption, so please release your assumption at the last step। ये होता है water for you, coffee, tea, ऐसे वैसे मत करना साहब, नूडल्स दूंगी आपको खुजला खुजला के, वैसे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, अच्छे तरह से। हाँ सर बोलिए, anyone wants to ask anything? So your next class falls on Friday, and Friday is a holiday. Friday is a holiday means you can come morning. You have the evening to your enjoyment. Shall we? So wait, we are 1 minute. Oh, he has school, so we got to do it in the evening. He has school. Sorry. Like tomorrow, we are having all morning classes. Whoever over there, righto. So we close our class now. Harshit and Hannah. Hannah and Harshit, you have 2 days holiday or 1 day holiday? We have a course. You are the only unlucky one. ठीक है, चलो।